जी अच्छी हमें डिस्कशन करबा लास्ट 5 मिनिट्स हमें डिस्कसन करबा ओके ओके सर 5 to 10 थैंक यू मिनिट्स सर हम थैंक यू सर मैं मु जो प्रॉब्लम देइथिली केते जण करिसंती ना करनांदी आगे सर सर सॉरी सर सॉरी सर ठीक अछि सॉरी सर वेरी गुड गुड अटेम्प्ट सो we'll discuss in last 5 to 10 minutes, don't worry. So we have already discussed these what is posting, what is balancing, what we have to write to balance carried down and balance brought down. That just we discuss briefly, then we may proceed. Yes. So we have already discussed there are two sides: debt, particulars, journal folio number, amount in debit side. सर फास्ट Then in स्लाइड ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ सर स्लाइड शो कल टिके बेटर होता टिके अधिक विजुअलाइजेशन होता slide show तो करिछि आप सर slide शिफ्ट share हो शिफ्ट F5 मार दियंतु shift F5 I think hella Yes, sir. okay यस सर okay so हमें last class रे discussion करथिले that is purely a summary statement of all transactions that relate to a particular item that take place during a given period of time and show their net effects. So it is normally prepared in T format, T accounts, that is simplified representation of ledger accounts and that are widely used. So T account has two sides. Left hand side is known as debit side and the right hand side is known as credit side. So just skeleton form of an account, that is debit side, credit side. We have to write DR in between, middle, we have to write down the concern account. Then in other side, we have to write credit. Then what is the specimen? We have already discussed, that is debt column, particular column, folio, journal folio column, debit side amount column, credit side amount column. Sorry. So how many columns? 4 columns. Clear? So what is posting? We have already discussed that every transaction is first recorded in the journal in the form of journal entry. Then from journal, it is transferred to the concerned accounts in the ledger, and such process of transferring the transaction from journal to ledger, that is known as posting. Clear? So Yes, sir. most important is balancing of account. In last session, we have not discussed this one. This one is very important. The word balance, what it means, what it indicates. It indicates the difference between total amount of two sides, total amounts of two sides of account. So each and every business house, every business person are interested to know the cumulative effect of the entries in various accounts or to know the net position of the accounts. So remember, for this purpose, the total the two sides of an account separately and find out the difference of two sides, which is called the net balance of the account. So what is that balancing of an account? That is the process. That is the process of finding out the difference between total of two sides of an account and recording it on the shorter side of an account. Clear? So that balance acceptance is put on the shorter side of the account, that we have to write balance C by D. Don't say C by D. That is balance carried down. That is written to indicate that the balance has been carried down to tally both sides. Whether that is debit side or credit side, we have to write balance carried down. Clear? Then if balance carried down is written on the debit side of the account, it is brought down to the credit side as by balance brought down. Okay. If by balance carried down is written on the credit side, we have to use that to and by in two sides.
debit side to credit side by. So by balance carried down is written on the credit side of account. It is brought down to the debit side as to by balance brought down. Clear? So balance an account means to make the both side debit and credit equal by putting the difference in the lesser side. जो side भी हो कम अच्छी सही थे लिखा हबो टू लिखा पारे बा by balance carried down लिखा पारे सेटा opposite side को after balancing sign we have to transfer it to balance brought down or by balance brought down. Clear? So what is the features? Just to take it screenshot. So ledger is the main book. Pages of the ledger are numbered consecutively. An index of various accounts content the ledger is given in the beginning of the ledger. जेमते हमें प्रत्येक बही गोटे कंटेंट देखुचे एट सेमते गोटे कंटेंट रहइबो. A ledger can be kept in the form of bound ledger or loose leaf ledger. It provides full information regarding assets, liabilities, capital, income, expenses of the business unit. Clear? Just to take screenshot. Excuse me, sir. Yes. Sir, say balance carried down or brought down that ଟିକେ ଆଉଥରେ କହିଦେବେ. ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା ସାଇड ରହିଲା. So suppose debit side 100 टंका हैला टोटल रे क्रेडिट साइड टा 80 टंका हैला कोपट साइड टा लेस हैला क्रेडिट साइड लेस हैला और 20 टंका क्रेडिट साइड लेस हैला तो से क्रेडिट साइड रे अपन लिखबे बाय बैलेंस कैरिड डाउन तो बोथ साइड मिसी गला 100 हे गला. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो देन जो 20 टंका टा अपन अपोजिट साइड को ट्रांसफर करिवे कोन लिखिबे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंसिंग परे तो 100 रुपीस बैलेंसिंग हे गला 100 रुपीस बैलेंसिंग परे अपोजिट साइड को बैलेंसिंग परे 100 रुपीस बैलेंसिंग किले हे गला किले परे कि दिक्ले आनले दिक्ले हे गला ता परे अपन ट्रांसफर करिवे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सपोज क्रेडिट साइड रे 100 अछि डेबिट साइड रे 80 अछि so what we have to write to balance carried down then both side agreed then we have to transfer it to opposite side that means credit side. Okay, by after balancing so that we have to write that is by balance brought down. Clear? गोटे problem देखि देले आपण जानि देबे आहुरी clear हे जी. Clear? So coming to this one is very important. So post the following transaction in the cash account and show the balance on 31st January 2021. 5th January cash receipt from Saubhagya rupees 1,60,000. 10th January purchase a vehicle for rupees 35,000 and that paid salary rupees 1,000 on 15th January. 20th January rent paid rupees 1,000. 25th January deposited into bank 30,000. 30th January commission and interest received rupees 1,000 respectively. Clear? So what we have to write? First we have to open an account both side 4 column then first transaction is on 5th January. Cash received from Saubhagya. So cash account debited to Saubhagya account. That is the journal entry. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right now we go for journal Yes, entry. Journal entry निजे हमें कहिले लेखिबा किछि दरकार नै वर्तमान हमें पढौचे कैश अकाउंट तयारी करछे. ओके कोन लिखिले कैश अकाउंट डेबिटेड टू सौभाग्य अकाउंट टू साइड लिखिले डेबिट साइड रे Debit side. कैश अकाउंट डेबिट हिज कैश अकाउंट डेबिटेड टू सौभाग्य अकाउंट 1,60,000. Clear? Similarly proceed to second transaction purchase a vehicle for 35,000. So पैसा गला ना पैसा आसिला. Golla. So vehicle account debited sorry so vehicle account debited to cash account so cash account is credited by vehicle account. Cash gala कौन आसिला vehicle आसिला so cash account credited by vehicle account amount 35,000. को साइड रे लिखिले credit side रे लिखिले debt देले amount लिखिले. Then proceed to third transaction that is paid salary rupees 1,000. Salary goes out from the business. Yes or no?
So salary, that is expenses, nominal account. So salary account debited to cash account. But the transfer करूचे cash account to, कौन लिखुचे? Cash account is credited by salary because that is expenses. Cash account is credited by salary account 1000 on dated 15th January. Then proceed to 20th January. Rent paid, same thing 1000. That is cash account, rent account debited to cash account. That is the journal entry. But I transfer करबा केमती? Rent account debited to cash account. Rent account को transfer कर देले, debit side रे लिखले rent account रो. Then credit side रे हमें लिखिबा. What we write in credit side? That is cash account credited to, cash account credited by rent account 1000. Clear? Similarly, 25th January deposited into bank 30,000. So what is the journal entry? Please tell me. Bank account debited to cash account. Cash account debit to bank account. Very good. Very good. Bank account बढ़िला, cash कमिला. So bank account debited to cash account. So cash account is credited by bank account 30,000. Then 30th January commission and interest both received. Cash account बढ़िला, cash account debited to commission received account to interest account received account. खाली इंटरेस्ट लिखले भी चलिबो काहे ना सेटा डेबिट साइड इंटरेस्ट रिसीव लिखबाटा उचित इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्लियर सो हमें वर्तमान सब पोस्टिंग कर देले ओनली कैश अकाउंट बिकॉज़ क्वेश्चन सेज बोथ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश अकाउंट यस और नो सो जेतले हमें पोस्टिंग कर देले हमें कोन देखिले इन डेबिट साइड टोटल इज 1,62,000 इन क्रेडिट साइड दैट इज शॉर्टेज बाय 95,000 सो what we write? By balance C by D carried down. So both side agreed. So double gara diyachi, that is balancing sign. Yes or no? Double gara diyachi 1,62,000 pore. Dita gara diyachi dekhantu. Se dita gara hochi balancing sign. ताको हमें कौन कहूचे balancing किले हे गला अपन को 900 ग्राम देले अपन नेक पळे आसीबे कि दुकान रु जम्मन No, sir. सोनालिका मैडम पहले हम नहीं आसीबे सर मु कहली जम्मा आनिबिनी जम्मा आनिबिनी 1100 देले किछि कहबिनी किछि कहबिनी खुचरे नहीं आसी Okay, 1,62,000 both side hegala. Then we have to transfer it to opposite side. What we have to write? That is two balance brought down 95,000. Any doubt in this 6 transaction? How to close the account? No, sir. Here credit side is shorter, credit side is less. If we compare to debit side total is 1,62,000, but credit side that is only less than 95,000. So we have to make total. So by balance that we have to do in rough. Okay, not here, not in account. So what we find out, that is we have to write by balance carried down 95,000. Then we have to make balance both sides. 1,62,000, 1,62,000. Debit is equal to credit. Debit aspect is equal to credit aspect. So we have to transfer it to next. Two balance brought down. Sir. Yes. Sir, balance credit down में sorry carried down में 95,000 तो ऐड कर लिए, तो फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा है लास्ट मतलब डेबिट साइड में? बढ़िया कथा कहले आपनकर सेही दिन जाए बैलेंस आपनकर 95,000 शॉर्ट थिला हैला कैश टा कोन एसेट होना नहीं yes or no Yes sir. So that is asset, that is coming under real account. Yes or no? Yes sir. Yes sir. आपनकर कैश बैलेंस आपन केबे का कहजंदी कि मो पाखरे -500 टका अछि? No sir. No sir. केबे कहजंदी अरे मो पाखरे संग मो पाखरे -500 टका अछि नबु की 200 नै जा एमति कहजंदी कि No sir. आपन कोन सर कहजंदी मो एमिति भी पाखरे होई परिबा केमति आइ सर पारे? सपोज मु गोटे कोठी बाकी रे जिंस नै आछि मु कहबी तू सेठी 200 टका देई दबु मोर -500 टका ना ना एटा सुनंतु आपण ए जो सपोज जदी इफ एनी बट नॉट अकाउंट से चलिबनी. ओके सो हां
आपणकर एठी 95,000 सब बेले मन रखु कैश टा पॉजिटिव बैलेंस केबे नेगेटिव आसीबो नाही प्रथम कथा। Yes, sir. द्वितीय कथा मैडम जो पचारचंती हमर प्रथम बेसिक फंडामेंटल कहला फर्स्ट वी हैव टू मेक बैलेंस। सो व्हिच साइड इज लेस फ्रॉम कैश अकाउंट वी फाइंड आउट क्रेडिट साइड इज लेस। हाउ मच Credit अमाउंट side. इज लेस 95,000 लेस। सो वर्तमान हमें बैलेंस कर देले both side agreed 1,62,000 to 1,60,000 that is up to 31st March 21 yes or no Yes, sir. Yes, sir. 31 सर 1 बैलेंसिंग टा उतरे कहबे सर। एक्चुअली कहबी 31 1 21 रे मैडम टिके आगे बुझी जानती 31 1 2021 रे हम पाखरे 95,000 थिला। सो हमें सेटा को नेक्स्ट ट्रांसफर करछे कोठी ट्रांसफर करछे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 95,000। रिमेंबर ए जो 95,000 डेबिट साइड रे लिखुची आपण गोटे वर्ड सुनथिले डेबिट साइड वर्तमान सुनंतु दिस जो डेबिट साइड रे 95,000 लिखा आइची टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सेटा को हमें कहउचे डेबिट बैलेंस। कोन कहउचे डेबिट बैलेंस Debit क्लियर। balance. हां जो हमर सर से गोटे जिनस सर जो बैलेंस ब्रॉट डाउन पूरा रिक्वायरमेंट कोन होता है 90,000 इक्वल कोन पे मान बैलेंस करियो क्रेडिट के थ्रू जो जानि होन हां बाय आपण क्रेडिट आपण के सुनिबा को चेष्टा करंतु प्रथमे मु आपण को एठी पुनी फेरे नउची देखंतु balancing of an account that is the process of finding out last one line ta ko padhantu balancing of an account is the process of finding out the difference between total of two sides of an account and recording it on the shorter side of an account। तो आपण एते बेले बोथ साइड बैलेंस करचंती सपोज मु डेबिट साइड रे 100 टंका अछि क्रेडिट साइड रे 80 होची टोटल तो को साइड टा कम होची Credit side. डेबिट साइड टा क्रेडिट साइड Credit केते side. शॉर्ट होची केते Credit शॉर्ट होची side. 20 टंका शॉर्ट होची 40 down. 20 टंका शॉर्ट होची। सो Yes, sir. कौन लिखिला द बैलेंस ascertain is put on the shorter side of the account with a reference balance carried down अणा गला 80 टंका शॉर्टेज 20 टंका शॉर्टेज थिला 20 टंका अणा गला that is written to indicate that the balance has been carried down to tally both side। वर्तमान हमें टैली करबा फर्स्ट बेसिक फंडा हला हमकु टैली करे पड़े both side whether that is debit side or credit side shorter clear। both side रे हमें कौन लिखिबा बैलेंस carried down डेबिट साइड रे हमें सर जेमिति आमे अकाउंट्स रे लिखो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस opening balance closing balance opening balance closing balance is different ये दिन से अलग हेगला पूरा। opening balance closing balance is different but when you tally the account in whether that is in debit side is shorter whether that is in credit side shorter what we have to write balance carried down okay। so debit side जते बेले हम shorter होची कोन लिखचे ना टू balance carried down credit side जते बेले shorter होची हम कोन लिखचे by balance carried down। our objective is to make balance क्लियर। 5 केजी चीनी मागिबे 4 किलो 900 देला कहबे अरे पक्का रे आ टिके 100 हेनी तो 5 किलो नेबे तो एठी शॉर्टेज होची 95,000 क्लियर। व्हाट वी हैव राइट दैट इज बैलेंस कैरीड डाउन। सो बुझी पाले काहे की बैलेंस कैरीड डाउन लिखा होची मींस बोथ साइड डेबिट क्रेडिट को इक्वली करिया इक्वल करिया पे हमें बैलेंस कैरीड डाउन जदी सेटा डेबिट साइड रे टू बैलेंस कैरीड डाउन जदी सेटा क्रेडिट साइड रे बाय बैलेंस कैरीड डाउन क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. then we have to transfer it to the next after balancing we have to make balance 1,62,000 is balancing figure okay। so then we have to draw two lines that is balancing side data line 162,000 पर debit side credit side both side रे पड़ी त माने वर्तमान मिसी गला then we have to consider that 95,000 by writing two balance brought down okay। so जेहेतु एटा कैश अकाउंट asset account coming under real account so remember ये जो 95,000 debit side रे after balancing sign लिखा है ची that shows debit balance because never cash account is be negative never that might be
maximum to maximum 0, no cash. मो पाखरे किछि cash नाही. Never we say minus 500 is with me. Okay, that might be 0 or any amount. Okay, here that is 95,000. Any doubt in these 6 transactions? No sir. काली जने सार पचारथिले मोर ना रिकॉल नाही से बधु आज नाहंती काने क्वेश्चन किछि आसुनी. सो ये जो 6 अकाउंट वर्तमान ट्रांसफर रे किछि बुझा रहला कि सर मोटे डाउट अछि सर टिके आउट के हल्का रे मोटे लेटर जॉइन कली सर टिके आउट खाली एट रिवीजन एटा गोटे मिनिट रामकृष्ण नंद हो ठीक अछि सुनतु ए जो 6 टा ट्रांजैक्शन गोटे एस्पेक्ट में डिस्कशन कले ओनली कैश ऑल ऑफ अस बी क्लियर अदर अकाउंट इज देयर सौभाग्य अकाउंट vehicle अकाउंट सैलरी अकाउंट रेंट अकाउंट बैंक अकाउंट कमीशन रिसीव्ड अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हमें एठी एतिको अकाउंट आ नै नाही ओनली आवर ऑब्जेक्टिव इज टू post the following transaction in the cash account only cash account one aspect हमें देखै छै other aspect रो प्रत्येक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हेई नाही क्लियर सर गोटे क्वेश्चन थिला सर कोन सर 5 जनवरी हमें लिखिल सर कैश रिसीव्ड फ्रॉम सौभाग्य 1,60,000 हां कि सर हमें एटी पर्टिकुलर से नरेशन लिखला टू सौभाग्य अकाउंट एठी नरेशन लिखा होनी कोठी लेजर कोठी नरेशन लिखा जाय एठी मु कहि परबी आपनकर ट्रांजैक्शन न देखि कि जे मु सौभाग्य टू 1,60,000 टंका आनिची कमीशन पाइची 1,000 टंका इंटरेस्ट पाइची 1,000 टंका व्हीकल मोटे किनिची 35,000 टंका देइची सैलरी 1,000 देइची रेंट देइची 1,000 बैंक अकाउंट को मु देइची 30,000 मो पकु जाइची तो बैंक अकाउंट दिस इज ओनली द समराइज डिटेल्स ऑफ अकाउंट लेजर रे समरी लिखा जाय नहीं समरी लिखा जाय जर्नल रे एनी अदर क्वेश्चन हां नंद बाबू आ कोन पचारे अछि कोंतु राम कृष्ण नंद कोन सर ई ट्रांजैक्शन विषय आउथर सर डिस्कस कर दोटी अच्छा ट्रांजैक्शन गुडा हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को जाउचे जनवरी एटा अपन स्क्रीनशॉट नै जानतु अपन निजे देखंतु जद न बुझ परबे मत पर्सनली पचारि ओके हां अपन एटा को स्क्रीनशॉट नै जानतु हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डिस्कशन करबे अपन आसिले एबे बुझी परबे क्लियर प्रोसीड टू नेक्स्ट वन Yes, sir. so just to read this transaction Firoz Enterprises started business with cash 5 lakh vehicle 2 lakh land and building 1 lakh I will ask one question you have to raise your hand and tell me okay samaste kahibe nahi how many account involved with this transaction Shiv Prasad yes sir please tell me how many account involved with this transaction sir one is cash no Sir, one is cash sir, one is Other cash one one is is vehicle. Firoz Enterprise and one no is no Sir, three. सर 3 Four. अकाउंट 4 account one is cash account second one is vehicle Capital. account vehicle account, one is land and building building. account. one is Firoz capital account Yes, sir. total capital is how much 8 8 lakh 8 lakhs 8 lakh 8 lakh, 8 total lakh. is 8 8 lakh lakhs sir सौभाग्य total 8 lakhs, हाँ. देइछि केचे कैश आकारे 5 लाख देइछि गोटे गाड़ी देइछि तार दाम होछि 2 लाख लैंड एंड बिल्डिंग देइछि लाख केते सस्ता लैंड एंड बिल्डिंग ओके सो एति की जिंस से बिजनेस देइछि स्टार्ट करछि क्लियर देन सेकंड वन ओपनिंग ए बैंक अकाउंट विथ SBI by depositing 50,000 so केतरा अकाउंट इन्वॉल्व one is bank other one is cash all of us agree bank cash yes sir very good then third one purchase computer for office use through cash so one account is computer other one is that is cash cash Second. yes then next transaction purchase computer from computer mart rupees 10,000 okay one is computer mart no No, sir. no एटी cash Purchase account, Purchase computer account. mat. गोटे परचेज अकाउंट गोटे कंप्यूटर मार्ट अकाउंट एठी हमें जते बेले ट्रांजैक्शन पे भली की लक्ष्य रखिबा एठी cash कंपनी cash सेल और करछि कंप्यूटर computer कंप्यूटर सेल करछि बुझिला कि तो कंप्यूटर ऑफिस यूज में किनिछि कंप्यूटर सेल भी करछि ता माने फिरोज एंटरप्राइजेस डील्स विथ कंप्यूटर बिजनेस यस और नो yes sir Yes, sir. ओके तो कंप्यूटर एठी में एठी निया परचेज एटा क्रेडिट ट्रांजैक्शन
This transaction on 5th January is purely credit transaction. Purchase computer from Computer Mart. So one account is Computer Mart, other one is purchase. Clear? Then issue a check to Computer Mart 5,000. It a part payment hela. Bank account komila. So SBI account, other one is Computer Mart. So it is Computer Mart receiver or giver? On 7th January. Receiver. Sir receiver issue करा Computer Mart को credit करिबा ना debit करिबा? Debit करिबा sir. Debit sir. Debit No, करबा। no. Debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out. Debit all expenses losses, credit all incomes. एठी से होची receiver. 7 जनवरी से receive करूची आपनठू आपण चेक दउचंती 5000 part payment. Yes or no? yes sir Yes, sir. Then 8 जनवरी टिके जोर हे जाउची की? ना 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 सर ठीक ठीक अछि Okay. Then 8 January electricity charges paid through check. So SBI रू पळेला पैसा कहा अगेंस्ट गला ना इलेक्ट्रिक चार्जेस एते कम पैसा कोन उठीची फिरोज एंटरप्राइजेस ओके ए कथा जमा भाबिबे नै भाबिले अकाउंट प्ले जीवो जहां ट्रांजैक्शन देछि हमें सही अनुसार चलीबा देन yes sir बेले बेले मु खाता देखिला बेले लेखि पिला भी लेखिचंती सर इलेक्ट्रिक चार्जेस एते कम कोन आस मो घरे तो 10,000 आसी मास क्वेश्चन इज रॉन्ग तो सॉरी गला पाठ सही से माने डाउट करछन्ती से माने से जो ऑफिस को तांगर डाउट करछन्ती हुक को पकैछन्ती माने बदे यूज करना okay then 10th January sold computer to Barsa rupees 5,000 received from Barsa rupees 4,500 with full settlement so एठी प्रथमे आपण सेल करछन सेम डेट रे सेल करछन डिस्काउंट सेल करछन हो ना नहीं सेम डेट रे सेल करछन सेकंड डेट रे सेम डेट रे आपण करछन्ती वर्षा टू 4,500 पाइछन्ती फुल सेटलमेंट ता माने 500 टंका रे आपण कोन हला लॉस हला ना नहीं लॉस हला एठी तो डिस्काउंट अलाउ करले ना डिस्काउंट रिसीव करले Allowed. allowed तो डिस्काउंट अलाउड का डेबिट होबो ना क्रेडिट होबो एठी Debit. डेबिट क्रेडिट Expected loss. शुणु सब बेले एमती खाली डेबिट क्रेडिट कहले होबनी हम पाठटा एमती खाली डेबिट क्रेडिट हैला तो पैसा नाही किंतु बड़ बहुत बहुत पैसा विषय कथा होचे तो मैटर होची आपण केबे भी कंफ्यूज हेबेनी इंटरेस्ट रिसीव इंटरेस्ट पेड डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव इज गेन फॉर द बिजनेस डिस्काउंट अलाउड इज लॉस फॉर द बिजनेस आपण 5,000 पाइबा कथा किंतु वर्षा आसी की 4,500 देला आउ 500 टंका देला नाही तो 500 टंका हला बिजनेस पाई लॉस दैट इज डिस्काउंट अलाउड so that is loss that is you have to debit because that is coming under nominal account debit all expenses and losses clear yes then proceed to 11th January again kwantu से issue check वाला टिके आउथरे issue a check to Computer Mart पूर्व ट्रांजैक्शन ने आपण केते टंका देई परचेज करथिले 10,000 क्रेडिट ऑन क्रेडिट क्रेडिट परचेज बाकी रे किनिथिले ताकू नेक्स्ट गोटे दिन परे आपण पेमेंट करले 5,000 देले एटी फुल सेटलमेंट लेखा ही नाही जेबे भी 50% डिस्काउंट नथिबो हैला तो आपण से कथा भी चिंता करिवे कोन ना एटा पार्ट पेमेंट हेची बोधे तो जहां ट्रांजैक्शन देछि आमे ताकू बुझिबा को चेष्टा करिबा एवं जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयारी करिबा फिरोज एंटरप्राइज रो सो इश्यू ए चेक टू कंप्यूटर मार्ट 5,000 दैट इज पार्ट पेमेंट चेक देले बैंक अकाउंट कमिला केते कमिला 5,000 काहा को देले कंप्यूटर मार्ट को देले कंप्यूटर मार्ट इज रिसीवर नॉट गिवर सो कोन हबो कंप्यूटर मार्ट अकाउंट Debit होबो. to SBI account computer mart account debited 5,000 to SBI account eta particular column रे लेखा जीवो मैडम बुझी पारले yes sir श्री मैडम sir rent received और interest received वाला मु जाईनी से जाय मैडम like 11th January sold computer to Lakshmi Priya this transaction is credit transaction or cash transaction क्या सर Credit. credit transaction सर मेंशन नहीं ना डेबिट देन एटी कोठी इंफॉर्मेशन अछि आपण पाइले कैश सेल्स बोली
No, এটা sir, credit cash transaction sir. ହବନି କିଛି A information transaction ନାହିଁ। ଟା purely credit transaction. You have to remember Lakshmi Priya. बाकी रे बिकिचंती पैसा से दबो sold computer to एठी लक्ष्मी प्रिया मैडम के नांदी तो sold computer to Lakshmi Priya. So business Firoz collect the amount from Lakshmi Priya. That is Lakshmi Priya is debtor or creditor? Debtor. Very good. Very good. आपण दिनकर कॉमर्स बैकग्राउंड की नहीं सर बिजनेस बैकग्राउंड मोर हां बढ़िया बिजनेस मोर करते कॉमर्स क्रेडिटर ठीक है हां डेटर नॉट क्रेडिटर क्रेडिटर Debtor, हेले आपको debtor. लायबिलिटी आपण पेमेंट करिवे so then last transaction rent received and interest received both are nature of payment nature of receipt that is coming under income nature is same cash received okay so that is Credit. compound journal entry rent and interest received okay three account we have to open rent received interest received and cash clear Yes. so these are the journal entry so मोटी लेखि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 आमे एतिकटा अकाउंट खोलिबा आमे जर्नल एंट्री करबे जीबानी immediately we go for ledger so how many account we have to open cash account vehicle account land and building account Firoz capital account then from second journal entry SBI cash already आमे खोली सारछि एक नंबर रे तो fifth account is SBI account similarly computer account cash account already अछि third transaction proceed to fourth transaction purchase and computer mart we have to open seventh and eighth ledger मो एटा आपण भाबंतु एटा लेजर फोलियो नंबर एटा होची लेजर हम केतेटा ओपन करबा लेजर हैला देन कंप्यूटर मार्ट ऑलरेडी अछि एसबीआई ऑलरेडी हम ओपन करिचे फिफ्थ नंबर रे देन वी हैव टू ओपन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू एसबीआई नाइन्थ लेजर देन वर्षा अकाउंट सेल्स अकाउंट 10th लेजर 11th लेजर देन discount allowed account that is 12th ledger then Lakshmi Priya account 13th ledger then rent received interest received both are income that is coming under nominal account that debit the all expenses losses credit all incomes and gains so journal entries cash account debited 2000 to rent received account 1000 to interest received account 1000 clear but remember one thing आपण मानकु कहि नाही suppose आपण जर्नल करूछन ओके जर्नल करूछन जर्नल कला परे प्रथम पेज रे आपण क्लोज हैला so what we have to write make total balance carried forward balance carried over so total both side 8,66,100 8,66,100 so then we have to transfer balance brought down carried forward or brought down 8,66,100 8,66,100 both side लिखिले then we go for other journal entry clear जदि गोटे पेज रही जाउची मेक टोटल जदि गोटे पेज नेक्स्ट पेज को आपण जेतले जाउचंती जस्ट टू कैरी फॉरवर्ड एंड ब्रॉट फॉरवर्ड यू हैव टू डू क्लियर इन जर्नल तो हाउ मेनी लेजर वी हैव टू ओपन 15 cash account land and building account that means this 15 account that is involved with Firoz so my question is to you cash account is here real account yes or no yes sir element is asset Yes. yes sir then land and building account vehicle account both are asset Yes sir. both are coming under real account Yes, sir. then Firoz capital account that is coming under personal account that is coming under element capital yes sir Yes, sir. then SBI account that is Bank. purely real account that is coming under asset no No, sir. no sir no sir yes sir No, it's current account. SBI that is business account That is your personal. मैं SBI account रे Firoz Real खोली account. थी so that is purely asset for the business as per companies act Yes sir clear so SBI that we have to take it in current asset cash in hand cash at bank SBI Canada Bank Punjab National Bank we have to write down so SBI that is asset for the business that is coming under real then computer sir. account asset asset that is real account purchase account that is Real account. expenses real Nominal sir. account. Sorry sir nominal purchase account Nominal. expenses Nominal. nominal account Nominal.
computer mart, 8 number Personal account. account. That is Credit. computer mart is, Personal. I think, computer mart. Personal account. That is purchase. That is creditor. Creditor. 100 Yes. creditor. So That is under creditor. creditor. That is liability. That is personal account. Clear? That is liability. That is coming under personal account. Then electricity charges. That is expenses element. Expenses. Then Nominal. account is nominal account. Similarly, Bursa account. Bursa is, I think, debtor. 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 Debtor, sir. Account, that is debtor. Then sales account. That is income. That is Income. nominal account. Discount allowed. That is nominal account. Nominal. Loss for the business. Lakshmi Priya. That is Debtor. sales. Debtor. Debtor. Personal account. Asset. Okay. Then rent received, interest received, both are income. Income. And that is coming under nominal Nominal. account. Clear about this 15? Whether that Yes, is sir. coming under which element and which account? Sir, once Yes, again. sir. कोन मानकर समस्तकर क्लियर हैला कि ए को जिंसटा को अकाउंट रे जीवो Yes, को sir. एलिमेंट रे जीवो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Then proceed to next one. Don't be confused. हैला मु वर्तमान 15 टा अकाउंट खोली देछि. कैश अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल अकाउंट, फिरोज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एसबीआई अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, परचेज अकाउंट, देन कंप्यूटर मार्ट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, वर्षा अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, लक्ष्मी प्रिय अकाउंट, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट. क्लियर? Proper ledger होले गेला. हां 15 टा लेजर मु वर्तमान टाणीची. वर्तमान में आपन को लास्ट आड़ को जीबी, लास्ट को फास्ट को जीबी हैला. मु गोटे रे बैलेंस बुझेबी आगो. ओके, देन वी प्रोसीड. कंफ्यूज हेबे नाही. मु प्रथम ट्रांजैक्शन टा बुझेबी, देन लास्ट दीटा को ट्रांजैक्शन बुझेबी इन बिटवीन ता परे. तो व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री? सॉरी, इट्स लास्ट जर्नल एंट्री. Last journal entry, that is cash account to rent received account to interest received account. आमे प्रथम रो आसिया कथा मु आगो गोटे गोटे बुझाई दउची, तापर मु डिटेल मझिरु जी. सर 10 नंबर डेट 10 डेट रे सर सेटा बुझे दोनो 10 टा बुझे देबी. 10 टा एटा न बुझिले आपण 10 टा टे कंफ्यूज हेबे हैला. मु आगो बुझे दउची, बुझंतु. 10 टा रे डिस्काउंट अछि, वर्षा अछि, कैश अछि. ठीक अछि. 11th January, last transaction of the business. Yes or no? बा हमको 11 तारीख जा इंफॉर्मेशन दिया जायछि फिरोज एंटरप्राइज को. Yes or no? यस सर. So how many account is involved? 3 account. Cash, rent received and interest received. प्रथमे में को अकाउंट को जिबा? कैश अकाउंट. So proceed to cash account. कैश अकाउंट को आसंतु. तो कैश अकाउंट जर्नल एंट्री कोन कहला? कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट. To rent received account 1000. Cash account debited to interest received account 1000. एटा को एस्पेक्ट रो पोस्टिंग कंप्लीट हला? डेबिट एस्पेक्ट. डेबिट एस्पेक्ट. आउ दीटा रहिलानी. रेंट अकाउंट को हमें जाइने, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट को जाइने. सो एठी मोर गोटे क्वेश्चन. जतबे रेंट रिसीव्ड को जिबा, एठी जर्नल एंट्री केमती पढिबा? रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिटेड बाय Cash account. rent receipt पड़ेला. Then interest received account is credited by Cash account. two side रे पड़िबो? Credit side. Debit side. Credit side रे. Credit So side. पड़ेबा वर्तमान credit side की. Very good. Rent received account and interest received account. So हमें by cash account 1000, by cash account 1000 both रे पकेया बोली कथा आइतली. यस तो वर्तमान पड़ला ना नहीं. अपन बैलेंसिंग गुडा को देखंतनी, खाली ट्रांसफर पोस्टिंग टा देखंत. ओके, बुझ पाले ना नहीं? रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, both aspect वर्तमान पोस्टिंग fully completed. Clear? सर. Then सर आउ तो टिके कोइ बेरी मीटिंग बिल्कुल पूरा कहबी थरे काहे कि आउ थरे कहूची सुनंतु. लास्ट ट्रांजैक्शन कहिला, लास्ट ट्रांजैक्शन को कंसंट्रेट करंतु. कहिला कैश अकाउंट डेबिट. जर्नल एंट्री जण जदी पढिया कहबो, आपण केमती पढिबे मु कहि दउ सुनंतु. कैश अकाउंट डेबिटेड 2000 टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट 1000 टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 1000 on dated 11th January 2021. Clear? So 3 accounts involved with this transaction. One is cash, that is debited. Other 2, that is rent received,
and interest received. So first you have to proceed, always you have to proceed to debit aspect, post debit aspect, then proceed to credit aspect. Never proceed credit aspect first, then debit aspect. Okay, that is the thumb, not thumb rule, that is easy process. Okay, आपण कोन चीज इग्नोर करिवेनी, तो ताको चेक करिया सेकंड टाइम पड़िबन. सो फर्स्ट यू प्रोसीड टू कैश अकाउंट. कैश अकाउंट एई लेजर टाको देखंतु, कैश लेजर टाको. सो जर्नल एंट्री इज डेबिट साइड रे कैश अकाउंट मझिरे हाथ रखंतु, डेबिट साइड की जानतु, कैश अकाउंट डेबिटेड डीआर लिखा आइछि टू, बिकॉज़ डेबिट साइड ता हला टू साइड, क्रेडिट साइड हला बाय साइड. सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू, rent received account 1000 on dated 11th January. Cash account debited to, interest received account 1000 on dated 11th January. So which aspect posting is fully completed? Debit aspect. Debit aspect. Clear? Debit aspect. Yes, So sir. other aspect is credit aspect. That is rent received account and interest received account. So we have to proceed to rent received account. Rent received account. Rent received account is credited by cash account 1000. Interest received account credited by cash account 1000. तो वर्तमान आमे कहबा पोस्टिंग फुल्ली कंप्लीटेड, फर्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन. क्लियर? Yes, sir. सो प्रोसीड टू फर्स्ट ट्रांजैक्शन. कौन कहला? कैश अकाउंट डेबिटेड रुपीस 5 5 लाख, lakhs. vehicle account debited 2 lakh, land and building account debited 1 lakh, to Firoz capital account 8 lakh. How many account is involved? 4 accounts. 4 account. Proceed. Yes. First, cash account. Cash account debited to Firoz capital account. Yes, sir. Yes, sir. So it is land and building ର କିଛି impact ଅଛି କି? No, sir. No, sir. This account is only cash account. Cash କେତେ ଦେଇଛି? 5 ଲକ୍ଷ. 5 lakh. So cash account debited to Firoz capital account. Land and building account debited to Firoz capital account 1 lakh. Then vehicle account debited to Firoz capital account. So वर्तमान one aspect posting fully completed, debit aspect. Then proceed to Firoz capital account. Firoz capital account is credited by cash account 5 lakh. Firoz capital account is credited by land and building account 1 lakh. Firoz capital account is credited by vehicle account 2 lakh. बुझी पाले ना नहीं? Yes, sir. Sir, once again. Once again. Okay. How many account involved? 4 account. 4 accounts. So we have to open 4 account. One is cash account, second one is land and building account, third one is vehicle account, fourth one is Firoz capital account. So first proceed सब बेले debit aspect आगे fill up करिवे. So debit aspect कौन हो? ना cash account debited to Firoz capital account 5 lakh. Yes, sir. Business को cash केते देइची 5 लक्ष. तो cash account रे हमें posting करूचे. सेठी land and building posting हबनी. सेठी vehicle account posting हबनी. तो cash account debited to Firoz capital account 5 lakh. Then cash account debited, land and building account debited to Firoz capital account 1 lakh. Then third one, vehicle account debited to Firoz capital account 2 lakh. All of us clear? Yes, sir. Yes, sir. That is debit aspect. तो आउ गोटे aspect रहला Firoz capital account. तो Firoz capital account कहा द्वारा क्रेडिट हैला? ना Firoz capital account is credited by cash account 5 lakh, by land and building account and by vehicle account. 2 lakh. So वर्तमान हमें कहबा posting fully completed first transaction. Clear? Yes, sir. Then proceed to second transaction, SBI account to cash account. So quota debit aspect. 2 accounts. Yes, sir. Quota SBI account, quota debit aspect. SBI account. SBI account. SBI account. SBI account. SBI account debited to cash account 50,000 on dated 2nd January. Yes or no? Yes, sir. गोटे aspect posting है गला. Then हमें cash को जीवा. Cash कौन है जी? Cash account is credited by SBI account. एठी credit side separate debit side हो. हाँ, एठी जो SBI account टा credit है लता माने कौन मत कहले? What does it mean? 50,000 टंका आपनकर cash गला.
50,000 टंका आपनकर कैश रु गला कोठी गला ना बैंक रे डिपॉजिट हला बुझी पाले Yes, sir. सेकंड ट्रांजैक्शन बुझी पाले ना नहीं Yes, sir. then proceed to third one computer account debited to cash account computer account debited to cash Cash account account. कितना account involved one is which one is debits Computer aspect account. proceed to Computer computer account computer account को आसंतु SBI पर खोला है सीरियली में account खोलिया मन इच्छा खोलिबा नहीं computer account debited to cash account 1000 पाड़ी सर कोन कहउचंदी Sir, no problem. Sorry. computer account debited to cash account 1000 so debit aspect posting completed Yes, then sir. cash account को जीवा cash account is credited by computer account Yes, sir. Yes, sir. 1000 credit side रे लिखले या माने कोन हम बुझुचे ना माने कंप्यूटर अकाउंट को 1000 दिया हला कंप्यूटर किने ना को 1000 कंप्यूटर दिया हला अकाउंट को दिया गला नहीं कंप्यूटर हमें Computer परचेस fine. करिचे हाँ कैश sir, परचेस computer- करिचे Cash परचेस Computer डेबिट fine. Cash हाँ। reduce. हां कैश Cash परचेस वाला computer आसला very good हैला purchase for office use computer ଆସିଲା asset then next journal entry purchase account and computer mart account purchase account and computer mart account purchase account and purchase account so journal entry कोन purchase account debited to computer mart account Yes. 10,000 लेखाला ना नहीं then computer mart account को जीवा computer mart account credited by purchase account 10,000 हमें पोस्टिंग कंसर्न करते हमें वर्तमान जाइने बैलेंसिंग चलला देन प्रोसीड टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट टू एसबीआई अकाउंट तो फर्स्ट वी प्रोसीड टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू एसबीआई अकाउंट 100 डेबिट एस्पेक्ट कंप्लीटेड Yes, sir. yes or no then proceed Yes, to sir. SBI account SBI account SBI account is credited by electricity charges 100 टंका इलेक्ट्रिक चार्जेस दिया गला चेक रे दिया क्लियर तेणु करी सर माने कैश कमिला तेणु करी एटी कैश को मिला नहीं एटी बैंक रु को मिला बैंक रु अमाउंट कमिला तेणु करी क्रेडिट साइड दियाला हां क्रेडिट साइड लिखाला सारा जेते कम क्वेश्चन करछन ओके सो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 100 बुझी पाले ना नहीं Yes, sir. Yes, sir. देन पढाइबा ए पेज रे सरला सेकंड पेज वर्षा अकाउंट टू सेल्स अकाउंट वर्षा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट वर्षा अकाउंट वर्षा अरे वर्षा कोडे गले हां वर्षा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट यस और नो Yes, sir. Yes, sir. मैडम के ना तो Yes, sir. सर गोटे मिनट सर वर्षा अकाउंट टू सेल अकाउंट 5000 बाय हाँ। कैश 4500 ना 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 आपण राइट साइड के देखुचंदी आपण बर्तमान पोस्टिंग करूचंदी आपण बाय कैश रे आपण किछि कंसर्न नाही हमको डेबिट साइड देखिए रसी आगे आपण वर्षा अकाउंट जर्नल एंट्री कहिला वर्षा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट आपनकर क्रेडिट साइड रे सेटा एपन आसी नाही से ट्रांजैक्शन इज 10 तारिख ता पर दिन होईची कि सेम डे रे हेईची हैला ओहो 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 हम ताको डिस्काउंट पाइचे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आई थिंक सो देखिबा सार ओड काई एमदी पचारले हां देखंतु सेम डेट रे हेईची किंतु प्रथमे हमें सेल्स करचे 5000 तापर से हमको पैसा देईची डिस्काउंट रे हो ना नहीं देईची ना नहीं Yes, Yes, sir. sir. सो प्रथम ट्रांजैक्शन को हमें कंसर्न करबा फास्ट वर्षा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 5000 सेल कर देले क्रेडिट सेल्स तो सेल्स अकाउंट को जीवा सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय वर्षा अकाउंट 5000 क्लियर नेक्स्ट Yes, sir. कोन जीवा सेही वर्षा अकाउंट को जीवा यस कैश अकाउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट वर्षा अकाउंट तो हमें प्रथमे जीवा कैश अकाउंट डेबिटेड टू वर्षा अकाउंट केते कैश पाइचे 4500. 2500. 4000 गोटे अकाउंट पळेला देन हमें जीवा डिस्काउंट
allowed account, discount allowed account debited to Borsa account 500. Yes, sir. Yes or no? तापर हमें Borsa account को करिबा Borsa account को करिबा Borsa account is credited by cash account 4500. Borsa account is credited by discount allowed 500. सर ए जो राइट साइड रोज माने वर्षार कैश कमिला सेति बिना कोन वर्षार कैश किछि कमी नहीं एठी वर्षा को हमें सेल करथिले 5000 टका सेल करथिले तापरे वर्षा को हमें रिसीव कले केते 5000 रिसीव करिया कथा किंतु वर्षा को हमें रिसीव कले 4500 एवं ताकू डिस्काउंट देले 500 बुझी पारले नहीं मोर कहया कथा वर्षा अकाउंट रो क्रेडिट साइड रे 4500 अछि माने वर्षा अकाउंट रो 4500 कमिला हां कमिला कहले हां सर ठीक कथा हमें ताकू रिसीव भी करि सारछे हला एटी कमिला को जीवनी हमें कैश रिसीव कर सारछे हला सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जीवा लक्ष्मीप्रिया अकाउंट टू सेल्स अकाउंट लक्ष्मीप्रिया अकाउंट proceed to Lakshmipriya account. Lakshmipriya account debited to sales account 7000. Yes or no? तो proceed to sales account से ऊपर अच्छी देखो sales account is credited by Lakshmipriya account 7000. Both side impact it देखो तो पूरा clearly अच्छी. First Lakshmipriya account debited to sales account 7 lakh on 11th January. Then sales account is credited by Lakshmipriya account. That is 7000. हायर वाला सेपरेट अछि ऊपर अछि ग्रुप रो कौन कहउचंती भाई ये म्यूट करो हायर अछि वुमेन्स अछि जगवंत सर जगवंत सर दुकान में अछंती की कौन किनुचंती सॉरी सर नहीं ठीक अछि एमती हुए समस्त वी ऑल आर बिजी हमको कोरोना बिजी कर देला ओके सो भाई माइक ऊपर कौन कहउचंती अरे बंद करो भाई माने ओके सो वर्तमान सब ट्रांजैक्शन हमर कंप्लीट हे गला ओके तो वर्तमान मु जाउची लास्ट ट्रांजैक्शन जोठ हमें प्रथम आरंभ करथिले ट्रांसफर अच्छा रेंट रिसीव्ड अकाउंट वर्तमान डेबिट साइड रे किछि थिला कि किछि नथिला पोस्टिंग कला पर केवल क्रेडिट साइड रे थिला यस और नो यस सर तो सेथिला के हमें शॉर्टर टा को साइड डेबिट साइड कहने हमें क्रेडिट साइड रे केवल बाय कैश अकाउंट 1000 लिखले सो एठी हमें डेबिट साइड रे कोन लिखले टू बैलेंस कैरी डाउन सो कोन हला एठी व्हाट हैपेंड बोथ साइड एग्रीड हे गला ना नहीं 1000 यस सर 1000 पर हमें दीटा गारो देछि दैट इज बैलेंसिंग साइन तो देन हमें ट्रांसफर करछे अपोजिट साइड बाय राइटिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 एटा को बैलेंस आपण गोटे वर्ड सुनिथिले क्रेडिट साइड एबे सुनंतु रेंट रिसीव्ड अकाउंट ता शो करूची क्रेडिट बैलेंस केते क्रेडिट बैलेंस ना 1000 जने पचारिबो काहे की सर क्रेडिट बैलेंस हमें कहिले हां सर okay why we say rent received is credit balance that is income na Yes, sir. that is coming under nominal account na Yes, sir. Yes, sir. so what nominal account says debit all expenses and losses credit all incomes and gains so remember always all income account shows credit balance ledger balancing करला परे जदी आपन को सेटा credit balance देखौ नाही that indicates somewhere that posting problem is there okay wrong posting is जा द्वारा की डेबिट बैलेंस देखुच क्लियर all income account next देखो interest received account same case by cash account 1000 shorter side is debit side two balance carried down we have to write then we have to make balance draw balancing side then transfer it to other side that is 1000 that shows credit balance that interest received account is also income. That is nominal account. Always income account shows credit balance এটা নিশ্চিত ভাবে মনে রাখিবে always যেতে income account
जदि इनकम अकाउंट डेबिट बैलेंस रे अछि ता माने कोन देखैबो कोन कहबे एटा रहिबो नाही इट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस क्लियर Yes, sir. sir. then proceed to sales account सार आसिलेन की के मिश्र सर आसिलेन आसिलेनी आछंदी सर Yes, sir. ओके आज्ञा ओके ओके ठीक अछि यू जस्ट स्क्रीनशॉट नहीं जानतु देखिबे देन विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास स्क्रीनशॉट नले Yes, sir. हाँ sir. यस सर एटा नहीं sir, नहीं गोटे मिनट हां नियंतु 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 डोंट वरी मिश्र सर भारी बढ़िया रहिबे यंग लोक एनर्जेटिक लोक डायनामिक लोक सर आसिलेनी सर नमस्कार सर आस्ते सर पड़े पळेले वर्ड जिबे नेट काम करनु तो नेक्स्ट साइज प्लीज सर एटा हे गला Yes, sir. हेला हाँ sir. एटा नहीं जानतु Okay, sir. yes sir एटा एटा डिस्कशन हे जाईची नहीं जाईथान Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. देन एटा ଆପଣ ଦେବେ ତ ଏସବୁ ନା ଆଜ୍ଞା रे पूर्वटा टिके vehicle account टा ପ୍ଲିଜ ଭାଇ नहीं सरले ओके सर थैंक यू सर वर्तमान एटा नहीं चंती हाँ कैश sir. एंड लैंड बिल्डिंग वेहिकल नेले यस सर एसबीआई अकाउंट पेज नेले हाँ sir. कंप्यूटर मार्ट अकाउंट नहीं चंती Sir. सेल्स अकाउंट नहीं चंती हाँ sir. रेंट रिसीव 6 पेज लेजर अछि वर्तमान Okay, आपन को एटा दे दउ एटा नहीं गले sir. एटा नहीं चंती हाँ sir. एटा आज्ञा सर एटा नो Yes, sir. सर नहीं जानतु तर या पूर्वटा आतुर काढले टिके दे दे गोटे मिनिट एटा नेले yes sir यस सर एटा Yes, sir. एटु न एटा आको न कंप्लीट complete sir then this one तो जो प्रॉब्लम मु देइथिली गुडाए देइथिली जर्नल एंट्री सेटा को हमें नेक्स्ट क्लास ऑफ फास्ट डिस्कशन करियो ओके हाँ sir. बढ़िया हो. यस सर ओके ओके वर्तमान एटा दे देली Sir. एटा नंतु ओके थैंक यू ऑल Thank you sir. थैंक यू सर थैंक यू सर Thank you, sir. थैंक यू सर गुड नाइट गुड नाइट थैंक यू सर थैंक यू सर एस्केप मारि दियंतु कांति सार कांति कर दिया Sir ଆସିଥିଲେ ତ? ठीक अछि कोन डाउट अछि पचारन हां अछंदी अच्छा सर, सर सर होस्ट कर अछंदी दियो सर देखा जाउ नांती हमको सर अछंती हां सर ओके विश्व सर मु लेफ्ट कली हां सर ओके Good evening sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर